Hi, friends. A warm welcome you to today's session. Today, the session is about time and work. That is what we are going to discuss. So, without doing any further delay, I'll take you to the screen, and that is where we are going to attempt solving some questions on time and work. Right? So, chalo, let's get started. So, friends, in time and work, what basically are the concepts that we need to master? So, there are majorly two different concepts. Now, today we are going to address one particular concept, and this particular concept is what we call as the relationship between time and work. Now, let's say if we have been given this particular question, and the question says that, let's say 15 men can finish one work, can finish a work, right? So, can, let's say, finish a work in, let's say, 6 days. And the question is that, uh, सेम वर्क को अगर मान लीजिए 10 men they come and do, so in how many days the work can get finished. Now यहाँ पर what we can do is we can remember this particular formula that T1 M1 is equal to T2 M2. So time in the first place is basically 6 days multiplied by first जगह में men I had 15 men. Second में T2 is basically what we call as time 2, which is over here I do not know, so I'll keep T2 as T2 multiplied by, now this time the number of men I have over here is 10 men, right? So clearly what will be the value of T2? T2 over here would be 6 into 15 divided by 10. So 6 and it's 9 days. So I get my answer as 9 days as T2. Great, right? Now, so for this, you have to remember the this particular formula that T1 M1 is equal to T2 M2. Now, honestly, my friend, I'm not a person who recommends that one has to remember a lot of formulas. Let's try and understand that why we say T1 M1 is equal to T2 M2. So first of all, let's understand what is the relationship. Now, tell me what is the relationship that you feel is the relationship is of time and work. टाइम एंड वर्क का क्या रिलेशनशिप है? इफ लेट्स से इफ आई से दैट मेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मेरे पास जो मैन पावर है वो कांस्टेंट है, सो टाइम एंड वर्क का रिलेशनशिप क्या है? कैन आई से दैट टाइम इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क? अगर मेरे पास एक कांस्टेंट मैन पावर है तो आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना आपको उतना ज्यादा काम कर सकते हो, विच मीन्स यू आर सेइंग दैट टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू अ कॉन्स्टेंट के, which means आप बोल रहे हो t divided by w is equal to will always remain constant, which means आप बोल रहे हो that ऐसे सिनेरियो में t1 w by divided by w1 will be equal to t2 divided by w2. तो ऐसे करके आपको एक्चुअली फॉर्मूलाज मिलते हैं, राइट? सिमिलरली अगर आप देखोगे, अगर आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड लेट्स से आप पहले ये डिटरमाइन करने की कोशिश करो कि टाइम एंड मेन व्हाट इज द रिलेशनशिप, राइट? इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? नाउ व्हेन आई से टाइम एंड मैन में रिलेशनशिप क्या है, आई कैन क्लियरली से ओवर हियर दैट, और काम यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वर्क जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट वही काम. सो कैन आई से दैट टाइम एंड मैन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. व्हाई आई एम सेइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आई एम सेइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज दैट अगर टाइम आपका बढ़ेगा तो मैन आपका घटेगा, राइट? तो अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो कम लोगों से काम हो जाएगा, अगर आप कम टाइम दोगे तो ज्यादा लोग चाहिए मुझे, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विच मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? द वैल्यू ऑफ टी बिकम्स इक्वल टू 1/m इंटू अ कॉन्स्टेंट के, विच मीन्स आप बोल सकते हो दैट टी मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, विच मीन्स आप बोल सकते हो दैट T1 M1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू T2 M2 बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एंड एम. सो यहाँ से आता है ये फॉर्मूला जो अभी हम लोग अप्लाई किया है. इट इज द रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड मेन विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? ओके, चलो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम लोग अभी करने की कोशिश करते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स से द क्वेश्चन सेज दैट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. ओके, लेट्स से 20 men. सो फ्रेंड्स, लेट्स से एक मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े दैट 20 men
राइट, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. दे वर्क फॉर 8 days टू डिग 16 वेल. राइट, और क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो अगर मान लीजिए द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मेन मुझे चाहिए होंगे, हाउ मेनी men will be required for 11 days if I have to dig 33 well. Suppose this is the question that I have been asked. Now, अगर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन से, how is this different? Over here, nothing is constant. Men constant नहीं है, days constant नहीं है, well भी, I mean, the work is also not constant. तो जब ऐसा situation आ जाता है तो हम क्या करते हैं? Let's try and figure out what is the relationship of all the three. You know that work is directly proportional to men. अगर आप वर्क बढ़ाओगे तो मेन बढ़ेगा. सिमिलरली वर्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका मतलब आप जैसे जैसे वर्क बढ़ाओगे टाइम भी बढ़ेगा, राइट? तो अगर मेन कांस्टेंट है, जब इस पर्टिकुलर केस में मेन कांस्टेंट अगर हो जाएगा तो वर्क एंड टाइम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है देन वर्क एंड मैन पावर जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा लोग चाहिए, राइट? तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें, सो फर्स्ट में यू गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट. तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? इट बिकम्स इक्वल टू एम टी. तो बिकॉज अगर W is directly proportional to M and W is also directly proportional to T, so W is basically directly proportional to MT हो जाता है, right? Which means आप बोल सकते हो that W is equal to what? W is equal to MT into a constant K, right? तो अगर आप W को यहाँ डिवाइड कर देते हो, so आप देखोगे हमेशा MT डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जो है, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू अ कांस्टेंट. वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. एम टी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, राइट? सो आप बोल सकते हो दैट M1 T1 बाय W1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2 T2 बाय W2. ये आपका जो फॉर्मूला है, दिस इज योर रामबाण एंड दिस इज समथिंग यू शुड नेवर एवर फॉरगेट while solving questions on time and work. M1 T1 by W1 is equal to M2 T2 by W2. आपको और कोई अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना है. सो इवन द फर्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं. सो अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो M1 क्या है? 20 मैन, राइट? व्हाट इज माई T1? टाइम इज इक्वल टू 8, राइट? काम कितना हो रहा है? 16 वेल्डिंग हो रहा है. दैट इज माई W1 इज इक्वल टू, अभी मुझे पूछा गया व्हाट इज माई मैन 2. मेरा मैन पावर कितना है मुझे पता नहीं है. हाउ मेनी डेज am I वर्किंग? 11 days. हाउ मेनी वेल am I digging? दैट इज 33, राइट? सो ऐसा सिनेरियो अगर हो गया तो भी हम लोग अगर कैलकुलेशन करें, 11 एंड 33 गेट्स कैंसिल विद 3, 8 एंड 16 गेट्स कैंसिल विद 2, 2 एंड 20 गेट्स कैंसिल विद 10, एंड ये 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा आई विल गेट 30 इज इक्वल टू M2. सो माई नंबर ऑफ मेन दैट इज रिक्वायर्ड इज 30. दैट इज इट. दैट इज हाउ सिंपल थिंग्स कैन बिकम, राइट? सो हम जब नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इस चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट जब किया जाता है तो कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. एफिशिएंसी जब चेंज हो जाता है, राइट? जब मेन के साथ फिर गर्ल्स या फिर बॉयज या फिर विमेन आ जाते हैं तो कैसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अप्रोच करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, राइट? अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर रियली लर्निंग समथिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ ODCH एप्टी. अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कि आपको पर्सनल अटेंशन मिले, तो हम जो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप का, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर ज्वाइन करके आप यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप of the masterclass. So friends, I'll see you in the masterclass, or if you're learning from YouTube, then I'll see you in the next YouTube video where I'll be taking one more chapter and we will discuss something new again. Thank you very much. Take care and keep learning aptitude the way it has to be learnt. Remember, the very reason why we are doing this session is because I strongly believe that aptitude should not be the reason why you get rejected in any of the competitive exam. My name is Neil and I'm hoping to see you all in the next video. Thank you very much. Take care and